Good afternoon, students. Yes, good afternoon to all. So let us start with the yesterday I have told you about the sound and that is what is the difference between noise and music, isn't it? Noise and music. So today different types of instruments, musical instruments. Musical instruments. So musical instruments are also of three types: wind instrument, then percussion instrument, and string instrument. So three types are there. Three: wind instrument, percussion instrument, or string instrument. Wind instrument that can be blown with the help of air or wind. So that is called as the wind instrument. जो ब्लो करने के बाद, हवा ब्लो करने के बाद जिसमें से आवाज निकलता है, that is called as the wind instrument. First one, wind instrument. तो विंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको ब्लो करने के बाद हवा से या हवा के सपोर्ट से जो इंस्ट्रूमेंट आवाज करता है, कैन मेक द साउंड विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड, दैट इज कॉल्ड एज द विंड इंस्ट्रूमेंट. ओके, एंड examples are so many. Here are the examples, like you can say shehnai, trumpet. So these are all wind instruments. So blow karne ke baad, again the mouth organ, that is also another one. So it comes under the wind instrument. Then percussion. Percussion यानी कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो द इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स द साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द मेम्ब्रेन. After striking the membrane, okay, that is called as the percussion instrument. मेम्ब्रेन के ऊपर जब हम स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन. फिर वो हमारे मेम्ब्रेन टाइप एक है मेम्ब्रेन, इवन इट कैन बी द मेम्ब्रेन और द प्लेटफॉर्म ऑफ एनी मेटल ऑल्सो. So it makes the sound. So that comes under the percussion instrument. So examples like drum, tabla, dhol, nagada, cymbals. Cymbal आपने देखा होगा, cymbal देखे हैं. So cymbals जो होते हैं like this. तो ये जो है ना cymbals. So bells. So these are all examples of percussion instruments. Percussion में membrane यानी हम membrane को किसी भी टाइप का हो, membrane स्किन का हो, लेदर का हो, रबर का हो, या फिर membrane मेटल का भी चलेगा. जैसे सिंबल में होता है, सिंबल में हम ऐसे ऐसे मारते हैं ना, symbols, bells, etc. So it comes under the percussion instruments. Okay, is it clear, students? Then next is the string instruments. These work on the basis of sound wave vibration. So यहाँ पर vibrations या साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब उसके स्ट्रिंग्स जो है वो वाइब्रेट होने लगते हैं. सो whenever the sound is produced through the striking of any string, that is called as the string instruments. And examples are so many.
Like here you can see guitar, piano, violin, sitar, sarod, santoor. So the pitch of the sound note produced depends on the length of the air column as well as the type and the thickness of the string involved. सो नाउ इस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में भी एयर कॉलम डिपेंड करता है। जब हम उसको कम ज्यादा करते हैं, उसके नोट्स को जब कम ज्यादा करना है, पिच को कम ज्यादा करना है, उसको टाइट करना, कम करना, and so the pitch of the sound depends on the length of the air column as well as the type and the thickness of the string. So type and the thickness of the string, यानी स्ट्रिंग लूज है उसको थोड़ा फिट करना, या उसको थोड़ा फिट है तो उसको थोड़ा लूज करना, यानी हमें किस प्रकार का साउंड चाहिए. So if we need that type of sound, we can stretch or lose the string. So the sound depends on the stretching or tightening of the स्ट्रिंग. ओके, और एयर कॉलम पे डिपेंड होता है. वैसे ही पर्कुशन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दिस मेक्स द साउंड और द साउंड डिपेंड्स ऑन द मेम्ब्रेन कितना थिक है, कितना थिन है उस पे, या फिर नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन. ओके, उस पे भी वो डिपेंड करता है. देन another one, like wind instrument may, so on blowing into the instrument, the pitch of the sound note produced varies depending on the length of the internal air column. So पहला वाला जो हमारा है विंड में, तो उसमें इंटरनल एयर कॉलम पे डिपेंड करता है. Now for example, जो ये हमारा जल तरंग है, इन जल तरंग ये ऐसे हैं, ऐसे पानी भरा हुआ है like this. So it depends upon the air column कितना empty है. पानी कितना भरा है वो ठीक है, बट जो साउंड आने वाला है, the sound that is produced depends upon the air column that is empty. इस पे डिपेंड करता है. फिर वो धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा है, सो उसका साउंड नोट जो है वो अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द एयर कॉलम. ओके, अंडरस्टूड. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. 3 टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो ये भी हमारा एक अच्छा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट हो सकता है, isn't it? Like with music, different types of instruments, isn't it? So last year I have given some of the students to make the percussion instrument, means type. You can use like membrane, balloon भी use कर सकते हो, उससे तबला बना सकते हो छोटे छोटे like that, just for model purpose like that. So these are the instruments, musical instruments. Now next is the noise pollution. So we are going towards the main part, that is the noise pollution.
noise pollution. Okay, sometimes it is buffering. Okay, might be because net is sometimes slow. Okay, so this one, students, till now I have received very less activities in the Google Classroom. Sunday चला गया आप लोगों का, फिर भी I will show you how many I have received till now in the class actually. Okay, so B class में अभी तक हैंड ओवर किया है only two students are handed. Sandhya also did not submit. Sandhya, you have not submitted in the Google Classroom. उसमें हैंड ओवर नहीं दिखा रहा है ना. Here three of them, Krishna, Nilesh, Sakshi. Okay, कितना? 5. और इधर 6 have handed. Okay, 6 in B class. Yes, 6 in B class and 5 in A class have handed. Rest of them marks नहीं चाहिए तुम लोगों को, तो marks नहीं मिलेगा. Remember that. Okay, if you don't want the marks, I will not give you. मैं बिल्कुल रेडीमेड मार्क्स तो मैं डालूंगी नहीं, ये याद रखना है. Okay, you have to do the work and then only the marks will be given to you. Remember this thing. Another thing, students. So next thing is that I told you something I was going to tell you about the. Sandhya, I have got that. I have got it. 6 from B and 5 from A class only I have got. So rest of them क्या कर रहे हो? Rest of them, I am asking rest of them, what are they doing till now? जिन्होंने सबमिट किया वो बोल रहे हैं I have. जिन्होंने नहीं किया है वो कब डालोगे? Isn't it? So what about that? You have to do it, you have to complete it fast. Okay, मैंने संडे का ही दिन दिया था. संडे का ही दिन दिया था. 1-2 दिन मैं और बढ़ा रही हूँ, लेकिन उसके बिना मैं मार्क्स नहीं डालूंगी. जब तक तुम सबमिट नहीं करोगे मार्क्स नहीं डालूंगी. So noise pollution. Now the next our topic that is related to our health. और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, isn't it? So noise pollution. Now noise pollution, noise से कहते हैं जब when the sound becomes harmful for our ears, when it is irritating to our ears and it causes any harm to our body, then it becomes harmful. So noise pollution, loud and excessive sound is unbearable to our ears. कैसा साउंड हमेशा unbearable होता है? Loud. So loud and excessive. So loud and excessive sound is unbearable. ज्यादा बड़ा साउंड और हर तरफ से अगर साउंड आ रहा है तो वो भी हमारे कानों को बहुत, yes, it is unbearable to us. So that type of sound is always called as noise. और ये noise अगर when it exceeds, अगर ज्यादा हो रहा है, हर दिन हो रहा है, then it will become a noise pollution. If this type of sound, loud and excessive sound, becomes continuous, and if it exceeds, then it becomes noise pollution. एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, डेली आपको ऐसा नॉइस सुनाई दे रहा है जैसे ट्रैफिक में होता है, सिग्नल्स पे या बड़े जंक्शंस पे, स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशंस पे,
then it becomes very horrible, and it is a noise pollution because it is very irritating and harmful for our health. So this type of noise is, whenever it causes this type of noise which is unbearable and very loud, so it is called as noise pollution. It is called as noise pollution. So unwanted and excessive sound in our environment, so that is called as noise pollution. नॉइस पोल्यूशन हमेशा खराबी होता है, isn't it? Any kind of pollution, whether it is a noise pollution or whether it is a air pollution, whether it is a soil pollution, any. So here this is called as the noise pollution. Now, for example, so like example is here. Sound of crackers, isn't it? In the time of Diwali. So like the sound of crackers, factories, vehicle, then desert coolers, air conditioners, aeroplane, transistors or television with high volume, any kind of sound with the high volume causes means we can say problem to our ears. So these kind of sound which are in the high volume creates irritation and it is harmful to our ear, and that type of sound is called as noise pollution. तो ये सारी चीजें ऐड है, इवन टीवी का साउंड, कभी कभी पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं टीवी, isn't it? घर का टीवी है बट द वॉल्यूम इज वेरी हाई, सब लोग सुन सकते हैं उसको, कभी कभी स्पीकर्स भी ऑन रहते हैं, देन समटाइम्स द साउंड ऑफ अगेन द फैक्ट्री व्हीकल, isn't it? So it is very unpleasant and it is having a high volume. Already we have seen the loudness of these kind of vehicles. अबाउ 80 होते हैं और अबाउ 80 जो है वो अनबेरेबल साउंड्स में आता है, और ये सब अगर 80 डेसिबल के ऊपर है तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल तो और भी ज्यादा है, अबाउ 120 वगैरह, बट अगर लाउड नॉइस हो गया, वेरी हाई वॉल्यूम हो गया, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, है ना। कभी किसी के घर में पेशेंट्स भी होते हैं, कभी किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, so they cannot means we can say that these sounds are unbearable for them also, for the patients, for the small children, they cannot sleep, isn't it? So in this way it becomes very irritating and it is a cause of noise pollution. It is a cause of noise pollution. So now, harms of noise pollution. तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं नॉइज पोल्यूशन में? सो नॉइज पोल्यूशन कैन क्रिएट मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज लैक ऑफ स्लीप. सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू लैक ऑफ स्लीप. And all of us know that if any train is going on, if aeroplane goes from very near, or traffic is there, then or if horns are blowing continuously, so we cannot sleep. The environment is very noisy, isn't it? So ये भी हो सकता है लैक ऑफ स्लीप, है ना। हमें नींद नहीं आएगी अगर इतना सारा आवाज आ रहा है, इधर से गाड़ी का आवाज, हॉर्न का आवाज, एरोप्लेन का आवाज, सिटीज में ऐसे होता है मेनली. So this problem is there, lack of sleep. Then lack of sleep, that is also called as insomnia. It is called as insomnia. Then hypertension,
हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सबको पता है, हाइपरटेंशन क्या है? हाई बीपी। हाई बीपी का भी ये रीजन हो सकता है, ज्यादा नॉइस होना हाइपरटेंशन यानी कि बीपी को बढ़ा सकता है, बीपी को बढ़ा सकता है हाइपरटेंशन। देन लॉस ऑफ हियरिंग, loss of hearing. Then anxiety, एंजाइटी घबराहट होना या एकदम से पसीना पसीना हो जाना, isn't it? That is also called as anxiety. Then fatigue, fatigue यानी सेंसलेस हो जाना, कभी नर्वस सिस्टम या जो भी पार्ट है बॉडी पार्ट वो सेंसलेस हो जाना, फटीग। देन सो दीज आर the reason, these are the symptoms for noise pollution. So noise pollution को कम नहीं समझना चाहिए, even this can happen because of the noise pollution, lack of sleep, hypertension, loss of hearing, anxiety. Okay, then a person who is exposed to loud sound continuously may get permanent or temporary loss of hearing. So continuous, if continuous loud sound is there all the time and continuously the person is suffering from such noise pollution, then permanent hearing loss भी हो सकता है। तो कान जो है वो बहरे हो सकते हैं, कान जो है हमारे डेफ हो सकते हैं परमानेंटली इफ लाउड नॉइज इज कंटिन्यूइंग। Understood? Is it clear? So these are the symptoms or the signs of noise pollution. Now the last measure to limit the noise pollution. So this one just I will read it for you, isn't it? Yes, deaf and dumb जिसे बोलते हैं ना। So measures to limit the noise pollution. Listen carefully, everyone. So first, TV or radio should be played at low volume. सब लोग ध्यान दो, our TV or radio should be played it at low volume. Then, by installing high quality silencer in vehicle में भी silencer लगाना है, नहीं तो फटफट फटफट आवाज करते जाएगा आपका vehicle. So silencer अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। Then misuse of loudspeaker, worshippers, outdoor parties and public announcement system should be checked. तो बहुत बार पब्लिक अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं या फिर कहीं पर कुछ छोटे मोटे अपने रिलीजियस प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स चलते हैं, isn't it? Otherwise और लाउड स्पीकर्स डीजे इस तरह से and they vibrate the system of our hearing system and damages also. Then minimum use of vehicle horns, they are irritating so much. तो बिना वजह हॉर्न नहीं बजाना है, पैं पैं पैं, isn't it? Just at the use only you have to make the use. Then plantation of trees, नॉइस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। नाउ यू विल थिंक दैट हाउ दिस ट्रीज कैन मिनिमाइज द साउंड। यस, द ट्रीज कैन ऑल्सो मिनिमाइज द साउंड। ट्री सिर्फ हमें फल देने का
या ऑक्सीजन देने का ही काम नहीं करते हैं, दे ऑल्सो मिनिमाइज द साउंड, दे एब्जॉर्ब द साउंड। और आपने देखा होगा कि ये जब डेंस फॉरेस्ट है या घना जंगल है या ट्रीज है, ये क्या करते हैं, साउंड के वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, दे एब्जॉर्ब, जैसे लाइट के इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, वैसे ही साउंड को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, यस, दे बिकम द ऑब्स्टेकल, क्योंकि बीच में खड़े होते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन ये साउंड को एब्जॉर्ब करने के कारण साउंड का इंटेंसिटी कम हो जाता है। देन noisy operations should be conducted away from the residential area. Noisy operations यानी जहाँ पर बहुत साउंड हो रहा है, कोई भीड़ है, क्राउड है, तो like that kind of operations must be held outside somewhere, away from the residential area. Yes, Shubham, is it? Because see, just now I told you, when we are hearing the sound, vibration के through ही हम hear करते हैं, isn't it? The membrane gets vibrated. और अगर loud voice होगा, तो सोचो कि membrane कितना हमारा vibrate होगा. So because of this, it may hurt our membrane. कभी-कभी कान का पर्दा भी, ये जो membrane है, टाइफेनम, वो फट जाता है। अंडरस्टूड, लाउड वॉइस के कारण, सो इट गेट क्लियर। यस, इट इज करेक्ट, ज्यादा वॉइस। देन awareness campaign to make people aware about the harmful effects of noise pollution and measures to control the noise pollution, ये भी होना चाहिए। awareness campaign against the noise pollution, as well as we should take the measures to control the noise pollution. तो जो भी हमारे measures हैं, like minimize करना साउंड वॉल्यूम को, प्लांटेशन करना ट्रीज के, अवेयरनेस लाना, तो ये होना चाहिए टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये सब होना चाहिए, and in this way we can minimize as well as we can control the noise pollution. Okay, तो ये रहा सब कुछ हमारे साउंड के बारे में। So dear students, you just see this, listen carefully. ये जो 5th and 6th क्वेश्चन है from NCERT, that one you have to write in your notebook. NCERT, that is न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है वो लिख लेना है, बस इसमें से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आपको कर लेना है फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। ओके, देन नेक्स्ट, so here also in your exercise, that is from the test book, 2 questions are there for numericals. So question number 3 and 5, तो ये भी आपको करना है। Okay, and then I will give you, I think I have given you the question answers of sound. Did I give you the question answers of sound lesson? Given? Okay, so write it down, and then we will start with the next lesson tomorrow. Okay, क्वेश्चन आंसर्स कर लो, NCERT के भी ये 2 जो है वो लिख लो,
and after that we will just start with the next lesson, that is some natural phenomena. साउंड का दिया है ना, तो लिख लो, isn't it? और सम नेचुरल फिनोमिना जो है उसका हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है स्टार्ट कर देंगे. नाउ ओनली आई थिंक 4 लेसन्स आर लेफ्ट, उसमें भी that is stars and solar system, that I will be leaving, और बाकी 3 जो है because 30% वैसे भी हमें छोड़ना है, but still जितना हमें होता है कंप्लीट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so that we will make sure we will complete all the lessons. Again, if you have any doubt, you can ask me through WhatsApp. Okay, is it okay to all? या और कुछ आपको पूछना है, so that now you can ask me. If you want to ask, you can just ask me now. Understood? Okay. Anybody else? Anything from the lesson sound? If you want to ask, no doubt, nothing. Okay. So let me end it now. Today's class. Okay, students. So thank you. See you tomorrow.